Core Course, an educational and informative YouTube channel. Assalamu alaikum, my name is Tahoor Abad, and in this lecture you are going to learn a very first and very crucial topic of linguistics, which is language, its origin and characteristics. आपको बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे मिल जाएंगी, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद लैंग्वेज के टॉपिक को हर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने का है, ताकि MA और BS के स्टूडेंट्स इसको बाआसानी हल कर सकें। I start this lecture with some theories which investigate how languages begin to exist and what is the first language that God bestowed to humans. The first one theory is divine source theory. Divine source theory से मुराद ये है कि खुदा ने इंसान को किस ज़ुबान के साथ नवाजा जो कि पहली ज़ुबान थी. The first one view is Christian view. According to Christianity, God gave Adam the kingdom of all animals in the Garden of Eden, and the first thing Adam did was to name these animals. Here I have a quotation from Genesis chapter 2, page 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called every living creature, that was the name thereof. यानी इसके मुताबिक खुदा ने सारे जानवरों और सारे परिंदों को आदम के सामने पेश किया, और आदम ने उनको जिस नाम से पुकारा वही उनके नाम थे. स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड एक और पॉइंट भी आपको बताता चलूँ जो कि मेरे नॉलेज में है कि हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते, एक डिवाइन लैंग्वेज नहीं बोलते, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं. इस पर क्रिश्चियनिटी का व्यू ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगे तो खुदा तक पहुँचने के लिए उन्होंने द टावर ऑफ बेबल बिल्ड किया, जिस पर खुदा ने उनको पनिश करके उनकी लैंग्वेजेस को सेपरेट कर दिया. द सेकेंड व्यू इज़ हिंदू व्यू. Alternatively, according to Hindu religion, language came from the goddess Saraswati, wife of Brahma, creator of the universe. यानी हिंदुओं का ये मानना है कि ज़ुबान एक गॉडेस सरस्वती से आई जो कि ब्राह्मा की वाइफ है, ब्राह्मा जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है. The next view is Islamic view. Islamic point of view is very close to that of Christian view. As we know, Allah says in Surah Baqarah, ayat 33, I am quoting its translation, O Adam, give them their names. When he told them their names, he said, Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and the earth? I know whatever you reveal and whatever you conceal. So students, it proves that God created language ability for humans, taught the names of the things and gave the ability to name things and call them. और सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको क्रिश्चियनिटी में बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होने की रीज़न क्या है, उस पर इस्लाम का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर मैं एक आयत की ट्रांसलेशन कोट करूँगा. And of his signs is the creation of heavens and the earth and the diversity of languages and colors. Indeed, there are signs in this for the wise. सो इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा ने कोई एक लैंग्वेज इंसानों के लिए नहीं रखी. खुदा ने जैसे कलर्स की डाइवर्सिटी रखी है वैसे ही लैंग्वेजेस की भी डाइवर्सिटी रखी है ह्यूमंस के लिए. अब हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये जानने की कोशिश की गई कि खुदा की तरफ से नाजिल करदा लैंग्वेज कौन सी है और सबसे पहली बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1. द ग्रीक राइटर हेरोडोटस रिपोर्टेड द स्टोरी ऑफ एन इजिप्शियन pharaoh named Pragmatics or Semantic, who tried the experiment with 2 newborn babies more than 2500 years ago. जॉयूल के मुताबिक एक ग्रीक राइटर हेरोडोटस ने ये स्टोरी नरेट की, जिसके मुताबिक एक इजिप्शियन फ़ेरौन ने जिसका नाम पसेमैटिकस या सेमेटिक था, उसने 25,000 साल पहले 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया. After 2 years of isolation, except for the company of goats and a mute shepherd, the children were reported to have spontaneously uttered not an Egyptian word, but something that was identified as a Phrygian word, bekos, meaning bread. 2 साल उन बच्चों को जब बकरियों और एक गूंगे शेफर्ड के साथ रखा गया तो उन्होंने आखिरकार जो पहला लफ्ज़ बोला वो बेकस था, जिसका मतलब था ब्रेड. The pharaoh concluded that the Phrygian, an older language spoken in the part of what is modern Turkey, must be the original language. तो फ़िरौन ने ये नतीजा निकाला कि फ्रीजियन लैंग्वेज जो कि अभी मॉडर्न टर्की है वहाँ पे बोली जाती थी वो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, यानी कि वही खुदा की तरफ से नाजिल करदा लैंग्वेज थी. जॉयूल के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि बच्चा जो भी पहला लफ्ज़ बोलेगा वो जिस भी ज़ुबान का होगा वही ज़ुबान डिवाइन लैंग्वेज होगी, यानी वो खुदा की तरफ से नाजिल करदा ज़ुबान होगी. लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर
bekos में से cos निकाल दिया जाए तो हमारे पास बै बचेगा। और क्रिटिक्स के मुताबिक ये बै वर्ड उन्होंने बकरियों से सीखा होगा, यानी कि इसका डिवाइन लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट जॉर्ज यूल ने लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपको बताता चलूं कि ये एक्सपेरिमेंट इस फ़िरौन ने ये जानने के लिए किया कि फ़िरौन ही इस दुनिया की सबसे कदीम नस्ल हैं या उनसे पहले भी कोई नस्ल ज़मीन पर मौजूद थी। जब बच्चों ने बेकोस वर्ड बोला जो कि फ्रीजियन वर्ड था, इस पर फ़िरौन ने ये नतीजा निकाला कि फ्रीजियन ज़ुबान और फ्रीजियन लोग उनसे कदीम थे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक इजिप्शियन लैंग्वेज तकरीबन 4700 साल पुरानी है और फ्रीजियन ज़ुबान तकरीबन 2400 साल पुरानी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2। King James IV of Scotland carried out a similar experiment around the year 1500 and the children were reported to have spontaneously started speaking Hebrew, confirming the king's belief that Hebrew had indeed been the language of the Garden of Eden। यानी स्कॉटलैंड के किंग जेम्स IV ने इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट 1500 ईस्वी में किया और जिसमें रिपोर्ट किया गया कि बच्चों ने फितरी तौर पर हिब्रू लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी। और इसी बिलीफ के मुताबिक ये माना गया कि हिब्रू ही वो गार्डन ऑफ एडन की लैंग्वेज है जो खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और भी किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी तमाम इस तरह के किए गए एक्सपेरिमेंट्स में किसी भी बच्चे ने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला और ज़्यादातर बच्चों ने किसी भी लैंग्वेज का कोई वर्ड नहीं बोला। सो किसी भी लैंग्वेज को डिवाइन लैंग्वेज प्रूव करने के सब एक्सपेरिमेंट्स नाकाम रहे। Secondly, we have the natural sound source. Through these theories, linguists tried to find the origin of language. The first one is the bow-wow theory. All languages have sounds that mimic the natural sounds. These are called onomatopic words. One belief is that human languages originated from these onomatopic words that mimic the sounds of entities or actions to which they refer. For example, meow originally would be a word to refer to cats. Another example, when an object flew by making a caw-caw sound, the early human tried to imitate the sounds to use to refer to the thing associated with the sound, which is a crow. And when another flying creature made cuckoo sound, that natural sound was adopted to refer to that kind of object. We have other onomatopic words in English. For example, splash, bang, boom, rattle, buzz, hiss, and also bow wow to refer to dogs. The second one is Poo Poo Theory. According to this assumption, language originated with the use of sounds that reflect emotions such as pain, fear, hunger, surprise, and the sound of laughter and crying, etc. Some examples of these sounds are oof, ouch, etc. इस थियरी के मानने वाले लिंग्विस्ट का ये यकीन है कि लैंग्वेज ह्यूमन इमोशंस से स्टार्ट हुई, यानी कि वो साउंड्स जो हमारी इमोशंस से निकलते हैं उनसे लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। द नेक्स्ट वन इज़ द यो ही हो थ्योरी। According to this proposal, early human beings used some sounds when they were doing some collaborative work. For example, when they were lifting a huge animal that they hunted, they used sounds to do their tasks for physical coordination and to reach their message to their friends that they shared the burden of their job. It is claimed that these sounds eventually turned out into a language. इस assumption के मुताबिक जब इंसान कोई collaborative work कर रहे होते थे या कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे होते थे तो उन नेचुरल निकलने वाली साउंड्स को मैसेज के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। इस तरह लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। The third theory is the oral gesture source. People use some non-verbal communication when they speak. For example, we wave our hands to say goodbye, we nod our head to show our approval or to mean yes. We produce a sound by our tongue when we mean no. The oral gesture source suggests that language started with the gestures that we use by our mouth and the other speech organs. इस थ्योरी के मुताबिक जैसे कि हम गुड बाय कहने के लिए हाथों को वेव करते हैं या फिर अपने सर को हिलाते हैं, इसी तरह हम अपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए। The fourth one is Glossogenetics. According to this theory, our ancestors became bipedal about 3.5 million years ago. When these humans could stand on their two legs, their larynx changed in a way to allow humans to produce vowel and consonant sounds in human languages. Human language developed as a result of this evolutionary change.
Well, it is hard to know when and how language originated. There are only hypotheses and assumptions, but it is easy to describe what language is and what's its role. So that is why we can only define language and its properties. This is going to be a second part of this question, but don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Watch the second lesson of this lecture, link is given below in the description.